Assalamualaikum. Someone please let me know if I'm audible. Also, I want to let you know that the meeting is being recorded, so you know beforehand, right? So if someone could please confirm if I'm audible. Waleed bhai, you are audible. All right, thank you so much. Acha, Assalamualaikum Mehran. I tried to make you the host, and if someone is in the waiting room, then please add them. All right. Okay, bhai, I'll add them. Acha, there are people in the waiting room, so add them. I've added them. Please let me know if you can access the waiting room, and then I'll proceed. Sorry, bhai? Can you see the waiting room and it's fine with you? Everything is fine? Yeah, everything is fine. Okay. So let me share my screen and let me know if you can see that. Okay. So you should be seeing my Anki screen. No, we can see it yet. Okay. Yeah, we can see it now. Okay, that's good. Acha, please let me know agar, if I should start with the basics or if I should directly start. I think it would be good if you ask your specific questions, and then agar kisi ko koi doubt ho about the installation and all, so then we can do that. I think we should start from the basics because most of us don't know, like from the very start. Okay, so the thing is, कि चैट बॉक्स में फिर प्लीज इनपुट देते जाएं अगर किसी को बीच में कोई क्वेश्चन पूछना हो, राइट? So the thing is what you basically do is first you go to Google and what you do is, let me share my Google screen with you. Here it is, right? So you can see it, right? Yeah. All right. So the first thing is a medical school Anki को जो है सर्च करो रेडिट पे, ठीक है? मेडिकल स्कूल आंकी रेडिट, फाइन। और इसमें दिस इज द फर्स्ट लिंक जो कि यू ओपन इट, it's where you find the deck, ठीक है? यहाँ पे this will be your focal area for every single deck that you want to install in your Anki. इसमें when you come scroll down, तो इसमें you can see step 1. Anking deck is the deck which I would recommend you to use, and skip all the other decks because they are not comprehensive. Almost all the information in these decks is actually present in this one, right? Plus it has some step 2 content too, so if you do it nicely and completely, you should be like fine for step 2 too at the most part. Or niche when you come, so you'll see anatomy के specific decks and like for resources पे. But what I would suggest you कि इसमें चक्कर में ना पड़े, just directly go to this thing, right? Anking को click करें, and when you click this, the whole description of the deck will come. This is it. इसमें you'll see कि पीछे जो V8 था और V10 था उसमें क्या था, और अभी V11 में इन्होंने क्या चेंजेस की, एंड फ्यूचर में V12 विल कम एंड ऑल. सो ये हर साल या कुछ स्पेसिफिक मंथ्स के बाद दे अपडेटेड एंड डू सम चेंजेस. इस सब को स्किप करें, इट्स नॉट वेरी मच रेलिवेंट एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट यू वोंट क्वाइट अंडरस्टैंड. You directly come
if you read it, it's really good, but अगर आप आपको इसकी समझ आती है, यहाँ पे आ जाएं, and you, this is where the money is, right? It's the download link where you'll find it here. लेकिन इसमें important thing is most of the people को फिर उनको ये मसला आ जाता है कि फिर उनका वो पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे आंकी में शो नहीं होते, तो इस बात का ख्याल करें कि डाउनलोड लिंक में आप जब आप उसको देख रहे हो तो इसमें मेक श्योर के मीडिया उसमें हो। अभी इस लिंक को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो दिस लिंक डजंट हैव द मीडिया, सो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यू विल कम टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज एंड यहाँ पे आपको जो है वो एक्चुअल डेक मिलेगा, ठीक है। यहाँ से इट इज द मेगा वो डिस्क है वहां पे, या बेटर मैं अक्सर यूज ये करता हूँ गूगल ड्राइव की, तो इसको आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे करें, एंड आई थिंक सो कोई टोरेंट की लिंक भी यहाँ पे अक्सर होती है, ठीक है। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, अगर गूगल ड्राइव पे नहीं हो रहा तो यू ओपन योर ओन ड्राइव एंड लाइक शेयर विद मी टैब, और उसको यू कैन जस्ट फॉलो दी स्टेप्स, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस ट्राई, तो लिंक 1 में खोलता हूँ और यहाँ से यू विल एक्सेस द लिंक and the deck will come. It should be around 3 GB to 4 GB or something, ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन if it is like GBs में, तो then you know कि इसमें वो जो ये देखें 3.1 GB, तो इसमें वो सारी मीडिया जो है वो अवेलेबल है। That's when you know कि yes, it's the actual one. So you'll download this from here, or then it will go to your computer, right, in any disk where you want it to be. उसके साथ आप क्या करें कि डाउनलोड करें आंकी को ना, तो आंकी जो लेटेस्ट वर्जन है, यू कैन डाउनलोड दैट, और यू कैन डाउनलोड एनी अदर वन। उसमें वो आंकिंग जो यूट्यूब चैनल, उसने कोई स्पेसिफिक आंकी का वर्जन बताया, लेकिन इट्स नॉट दैट के 2.1.2 उन्होंने कुछ बताया, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो डाउनलोड करें। यू कैन लाइक 2.1.4 आई एम यूजिंग आई थिंक, और वट एवर, सो यू शुड बी फाइन विद एनी ऑफ दैट, राइट। तो ये 0.5 तक अभी आ चुके हैं ना, तो फॉर विंडोज एंड ऑल्सो अपनी विंडोज को चेक कर लें 64 बिट है या 32 बिट है, और उसके मुताबिक जो है आप अपने आंकी को डाउनलोड कर लें यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से यू विल डाउनलोड द ऐप, एंड वहाँ से आपने डेक को डाउनलोड किया, उसके बाद व्हाट यू विल डू इज कि यू विल गो टू योर आंकी ऐप, राइट। सो लेट मी शेयर द आंकी स्क्रीन नाउ। दिस इज ये आपका ब्लैंक आएगा एट मोस्ट पार्ट। इसमें आपने ये करना है कि फर्स्ट थिंग यू डू इज के फाइल पे जाएं और यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करें, ठीक। व्हेन यू क्लिक द इंपोर्ट ऑप्शन, तो यहाँ से जो है वो आपका अगर डेक जहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो उस डेक को जो है आप इसमें जो है ऐड कर दें, एंड इट विल टेक सम टाइम, मे बी अराउंड 40 minutes, 50 minutes, an hour or something, and it will process depending upon the efficiency of the computer, and it will add it up. तो यहाँ पे आपका anking deck आ जाएगा, which I have a little bit changed. Actually अगर आपको मैं दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा आपका, यहाँ पे आपका ये anking step 1 होगा, step 1 नहीं anking होगा आपका, and then all the decks जो उसमें हैं वो नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे, सही है। उसमें फिर इम्पोर्टेंट थिंग इसके, अगर आप और कोई एड-ऑन्स डाउनलोड करते हैं या नहीं करते, एटलीस्ट गेट दिस एड ऑन, दिस वन, ये हायरार्किकल टैग्स जो है, ये दिस वन, ठीक, हायरार्किकल टैग्स, इसको आप जरूर डाउनलोड करें। उसकी वजह ये है कि व्हेन यू गो टू ब्राउजर, दिस ब्राउज में जब आप जाते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हायरार्किकल टैग्स का होना उसके लिए। तो इसमें ये कि इस बात को जरा गौर से समझें। ये जो है ना यहाँ पे यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन, तो इसमें इसको थोड़ा मिनिमाइज में करता हूँ आपके लिए इजी होगा। तो एक डेक्स का ऑप्शन है इसमें, लेट मी मिनिमाइज दिस, एंड एक टैग्स का ऑप्शन है, राइट। एक डेक्स का ऑप्शन है, एक टैग्स का ऑप्शन है, औरों के साथ का ज्यादा काम नहीं है। तो डेक्स में आपने लाइक यू कैन फाइंड कार्ड्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ डेक। फॉर एग्जांपल ये तो मैंने अभी स्टेप 2 के कार्ड्स हैं, इसको मैं हटाता हूँ। ये आंकिंग स्टेप 1 के जो हैं, तो इसमें फॉर एग्जांपल आप अभी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें बग्स वगैरह, स्टेफ ऑरियस एंड ऑल, या you are studying cardiology की physiology, this one cardio physio, right।
तो इसमें 706 कार्ड, ये सारी की सारी फिजियोलॉजी आ गई, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आप पैथो पढ़ रहे हैं कार्डियोलॉजी की, तो सारी 863 कार्ड्स एंड दे आर हैप्पैजार्ड, यू डोंट नो कि इसमें कार्डियक साइकिल के कार्ड्स कौन से हैं और हार्ट डिजीज के कौन से हैं, एंड लाइक हार्ट फेलियर वाले, और लाइक रोमेटिक हार्ट डिजीज, एंड इसमें स्टेफोरियस भी कहीं ना कहीं होगा। तो इट विल ऑल बी इन जम्बल्ड ऑर्डर, you won't be able to like select cards from here to do in your study mode, right? इसको मैं ब्राउजर मोड बोलता हूँ फॉर ईज, और इसको मैं स्टडी मोड बोलता हूँ। ये यहाँ से जब आप कोई डेक खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं अभी आंकिंग कार्ड्स रिव्यू करता हूँ, तो यहाँ से I'll go to the anking step 1, right? And these are the cards that are due for me today. तो ये this is the study mode, right? इस बात को समझे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टर्मिनोलॉजीज ना। तो ब्राउजर पे when you come towards the browser, तो इसमें एक ऑप्शन है डेक्स का, जो कि मैंने आपको बताया, उसमें कार्ड्स आपके सारे के सारे जम्बल्ड ऑर्डर में होंगे, राइट? तो आपको ईज नहीं होगी कार्ड्स को सस्पेंड और अनसस्पेंड करने में, यू विल हैव डिफिकल्टी इन दिस, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव डाउट इन दिस एरिया, और सब कुछ समझ जाते हैं। इस छोटी सी इंट्रिकेसी को आप समझ लें तो यू विल बी वेरी फ्रेंडली विद यूजिंग आंकी। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज कि आप पूरी की पूरी इस आंकी स्टेप 1, दिस आंकिंग जो है, इसको क्लिक करें, और इसमें 40,000 है, 26,000, इसमें मैंने कुछ कार्ड्स जो हैं वो स्टेप 2 का, मैंने आपको बताया ना कि इसमें स्टेप 2 के भी कार्ड्स हैं, तो मैंने यहाँ से जो है इस डेक से निकाल के उस डेक में जो है वो ट्रांसफर किए हुए हैं। लेकिन यूजुअली इट शुड हैव अराउंड 30,000 प्लस कार्ड्स, और मे बी आई थिंक 40,000 प्लस अभी चले गए। तो वो सारे के सारे कार्ड्स आप यहाँ से इसको इस जगह पे क्लिक करें एंड कंट्रोल ए प्रेस करें। तो व्हेन यू प्रेस कंट्रोल ए, ये सारे के सारे कार्ड जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, एंड देन या तो राइट क्लिक करके इसको टॉगल सस्पेंड एक ऑप्शन है, या अगर आप वो नहीं करते तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कंट्रोल जे को प्रेस करें, कंट्रोल जे। नाउ यू कैन सी दीज कार्ड्स हैव बीन सेलेक्टेड। तो मैं राइट क्लिक करता हूं, तो यहाँ से टॉगल सस्पेंड, अगर मैं ये क्लिक, अभी इसमें कुछ सस्पेंडेड है कुछ नहीं है, तो अगर मैं ये, तो मैं यूज कर चुका हूँ ना सब कुछ इनिशियली व्हेन यू हैवंट यूज्ड। अगर आपने यूज किए भी हैं कुछ कार्ड एंड यू वांट टू लाइक रीऑर्गेनाइज थिंग्स, तो इसको यहाँ से आप सस्पेंड कर दें। और इसका एक और अच्छा तरीका ये, अगर आपने कार्ड्स यूज नहीं किए, आप स्टार्ट कर रहे हैं आज, फिर तो बहुत ईजी है, सबको सस्पेंड कर दें। अगर आपने कार्ड्स किए हुए हैं, तो उसमें फिर थोड़ा मसला ऐसा होगा कि आप फिर यूं कर सकते हो कि इसको जब आप दबाओगे ना, इस ऑप्शन को, डेक को, तो इसमें ये हो जाएगा कि जो आपके देखें जो स्केजुअल्ड कार्ड्स है ना, स्केजुअल्ड जो आपने देखे हुए दिस ड्यू के ऑप्शन में देखें, तो फॉर एग्जांपल इस कार्ड को मैं 2022 के 11th महीने में, नवंबर में, ये मेरा स्केजुअल डे, तो आफ्टर अराउंड 6 मंथ्स और समथिंग ना, तो ये इंटरवल जिसके बढ़ चुके हैं ना, तो ये कार्ड्स मैं देख चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं दीज आर नॉट न्यू कार्ड्स, और नीचे जब मैं आऊंगा तो आई विल फाइंड न्यू कार्ड, दीज वंस, राइट? ये मैंने जो है वो नहीं किया अभी, ठीक है। और सिंस आई हैव डन मोस्ट ऑफ देम, तो मोस्ट ऑफ देम आर स्केड्यूल्ड एंड ऑल। लेकिन आपका फिर ये होगा कि अगर आप इस ऑप्शन को दबाते हैं ना, डेक को, तो हाँ व्हेन यू क्लिक वंस, तो आपके नहीं न्यू कार्ड्स ऊपर चले जाएंगे, एंड व्हेन यू क्लिक अगेन, तो न्यू कार्ड्स नीचे आ जाएंगे। यार, तो ये बहुत तेज से समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा अच्छा, आधे से ज्यादा समझा भी दिए। which part do you not get? Sorry, who was speaking? Can you please repeat your the question that you are? I think the mic was left on. It has been turned off now. Acha, so there isn't any specific problem, right? Yeah, that was not a problem. अच्छा ठीक है। येलो मीन्स सस्पेंडेड कार्ड, या ऑफ कोर्स ये ऑरेंज जो है ना, आई थिंक इट्स हानिया। तो ये मैंने कुछ इसको मैंने फ्लैग किया हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी इसकी। ये मैं अक्सर यूं करता हूँ व्हेन आई एम यूजिंग, यू कैन सी दिस ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, फ्लैग्स को आप चेक करें ना, तो इसमें रेड फ्लैग है, ऑरेंज है, ग्रीन, ब्लू,
पहले ये 4 थे, अब इन्होंने कुछ और भी एडिशंस कर दी, पर्पल एंड टर्कोइज एंड पिंक एंड ऑल। तो इसमें ये एक मजे का ऑप्शन है बाय द वे। इसको मैं यूं यूज करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी स्टेप 1 एग्जाम आपका आ रहा है ना, या आपका कोई मॉड्यूलर एग्जाम आ रहा है, लेट्स से इट इज योर ब्लड मॉड्यूल, या इट्स योर जीआईटी, या इट्स कार्डियोवैस्कुलर, या व्हाटएवर। तो उसमें व्हाट यू कैन डू इज कि व्हेन यू आर लाइक स्टडीइंग द कार्ड्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप इसको स्टडी करते हैं, तो ये आंकिंग स्टेप 1 मैंने खोला, राइट। Let's wait for this and study now, right? So this is the card. For example, I'm getting this card, and when I press space bar, I'll get the answer, ठीक। and when you यहाँ से आप जब कंट्रोल और कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये रेड फ्लैग हो जाएगा, यू कैन सी दिस फ्लैग, राइट, यहाँ पे फ्लैग है। if you control you press control 2, it will become orange, control 3 के साथ green, control 4 के साथ blue। यूजुअली मैं यहाँ यहीं तक यूज करता हूँ, आई थिंक 5 पे भी पिंक हो जाएगा, एंड यस 6 पे टर्कोइज, एंड 7 पे पर्पल, व्हाटएवर, बट आई यूजुअली यूज द रेड एंड द ग्रीन एंड द ऑरेंज, राइट। तो उसमें मैं यूं करता हूँ, यू कैन कलर कोड इट ना, like for example कुछ कार्ड्स ऐसे, for example I find this card really really difficult, and I think ये मुझसे भूल जाएगा बहुत easily, and I want to see this card a few days before the exam or whatever ना, तो I'll tag this card with a red flag, right, इसको मैंने रेड कर दिया। the next card जो मैं for example देखता हूँ तो वो it is this one, एंड ये मुझे इजी लगता है, तो आई डोंट नीड टू फ्लैग दिस। फ्लैग आपको कोई 1000 कार्ड्स में से मे बी यू हैव टू फ्लैग अराउंड 100 कार्ड्स और 50 कार्ड, फ्लैग ज्यादा ना करें, वो सर सिर्फ तब यूज करें जब आपको रियली व्हेन यू नीड दैट ना। लाइक फॉर एग्जांपल दिस कार्ड, तो इसमें मुझे लगे कि यार ये कार्ड जो है इसको मैं, इट इज sort of I know it and it's not that difficult, but somehow it would be nice अगर मैं एग्जाम से कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले मैं इसको देख लूँ ना, बिकॉज इंटरवल्स इसके काफी फिर बढ़ जाते हैं when you repeatedly like review these cards ना। तो इसको मैं ऑरेंज फ्लैग करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑरेंज फ्लैग कर दिया, एंड देन आई मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज अनदर कार्ड, इसको मैंने देखा रेड फ्लैग पहले से किया हुआ है, इट इज बिकॉज इट इज अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू, एंड मुझसे अक्सर ये भूल जाता था, तो आई फ्लैग इट रेड। तो इसमें इसको मैं यूज कैसे करता हूँ कि लेट्स से ये मैंने स्टडी कर लिए कार्ड्स, एंड नाउ आई एम इन द आई हैव डन माय रिव्यूज, और मैं कोई फिल्टर डेक वगैरह कुछ बनाना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑन द रेड कार्ड्स, if you can see the left hand side of my screen, and these are the red cards जो कि मैंने red flag किया मैं, it's around 1035, तो you can see के around 30,000 cards if I have done, या 28,000 of something, उसमें से 1000 cards मैंने जो है रेड फ्लैग किया मैं। तो इसका मतलब ये कि ये पूरे कंटेंट के, पूरे स्टेप 1 के कंटेंट के बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझसे भूलते हैं। लाइक आई वांट टू सी दिस कार्ड्स बिफोर माय स्टेप 1 एग्जाम एट whatever cost it is, right? तो मुझे क्या करना होगा कि like if my exam is in a week or in 2 weeks or in a few days or maybe after 2 days or tomorrow, तो मैं आज क्या कर सकता हूँ कि अगर आज मैं कुछ और पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो कि these are the most important things that I want to review, तो इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा कंट्रोल ए के साथ, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है, यू कैन इवन दिस, इसको आप सेलेक्ट करें ना, ऊपर जो ये चीज है फ्लैग एंड ऑल, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ इसको आप सेलेक्ट करें, एंड देन कंट्रोल सी के साथ या मे बी विद द राइट क्लिक यू कैन कॉपी दिस, और लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो एड ऑन इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, कंप्लीटली नोज, बट लेट्स ट्राई। तो यहाँ से एक ऑप्शन है टू मेक अ फिल्टर डेक, राइट, क्रिएट अ फिल्टर डेक, एंड यहाँ पे मैं सर्च में वही देता हूँ जो कि मैंने वहां से कॉपी किया, फ्लैग एंड वन, राइट। तो ये, और इस फिल्टर डेक को मैं नेम देता हूँ स्टेप 1 रेड कार्ड्स, राइट, ठीक है, एंड लिमिट को 9999 पे रखो, बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ द कार्ड्स वेदर दे आर 1000 2000 10,000 व्हाटएवर दे शुड कम, एंड कार्ड्स की वो जो है इसको रैंडम ही रख लो। रीस्केजुअल को आप, मैं आपको बताता हूँ फिर इसका कि इसका क्या फंक्शन है, लेकिन फॉर नाउ लेट्स जस्ट गिव दिस, राइट।
और इसको मैं बिल्ड करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इट डिड वर्क, लेट्स सी। ये इसको नीचे होना चाहिए स्टेप 1 के उसमें, लेट्स सी, या दिस वन ऊपर है। तो स्टेप 1 कार्ड्स है ना, रेड कार्ड्स, तो यू कैन सी के 992 कार्ड्स अराउंड वही है ना, 1035 थे या जो भी था। तो ये जो कम है कुछ, इसकी वजह ये कि कुछ कार्ड्स में 2 क्लोज डिलीशंस हैं, तो वो एक ही कार्ड जो है वो काउंट हुआ ना। तो बात वही है कि सारे के सारे कार्ड्स अभी यहाँ पे आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल कल मेरा एग्जाम है, तो आई एम रिव्यूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आई नीड टू नो फॉर माय एग्जाम, राइट। सो दीज आर द कार्ड्स जो कि विच आई यूजुअली फॉरगॉट। और कल मेरा ब्लॉक एग्जाम है, या हफ्ते के बाद मेरा मॉड्यूलर एग्जाम है। तो मैं यूं कर सकता हूँ, व्हेन आई एम रिव्यूइंग, फॉर एग्जांपल आप सेकंड ईयर में हो, आपका भी जीआईटी मॉड्यूल चल रहा है और 2 हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, लेकिन जीआईटी आपने पढ़ ली, कार्ड्स आपने कर लिया, नाउ यू वांट टू स्टडी कार्डियोवास्कुलर। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जीआईटी के कार्ड्स को रेड फ्लैग करते जाएं, या कुछ भी इस तरह उसके साथ कुछ करें कि उसके आप अगर कल कोई फिल्टर डेक बनाना चाहें तो यू कैन मेक दैट, राइट। So that's the basic layout of it. और let me go to the other important thing. इसमें मैंने आपको डेक्स का तो बता दिया ना, ये डेक्स यहाँ पे you when you click this, look, I have 39,000 cards in the whole Anki, right, at this time, step 1 step 2 को इकट्ठा करके। तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करें कि आप पूरे के पूरे 30,000 कार्ड जितने भी हैं उनको सेलेक्ट करें और उनको सस्पेंड कर दें। सस्पेंड का क्या मतलब कि येलो हो जाने चाहिए ना वो। अभी मैं इसको सस्पेंड नहीं करता बिकॉज इट विल डिस्टर्ब माय होल वो जो सिंक्रोनी है इसमें, लेकिन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन यू कैन सी दीज कार्ड्स हैव बीन सस्पेंडेड, राइट। ये मैंने स्टेप 1 एग्जाम के बाद कुछ सस्पेंड कर दी थी विच आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्टेप 2। तो दैट्स हाउ यू प्ले विद इट ना। तो यू कैन जस्ट लाइक सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, right, it's 3700 for you if you press Anki this deck को, तो सारे के सारे 30,000 जो भी हैं इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल जे के साथ। अगर आप एक दफा प्रेस करते हैं तो ये सारे येलो हो जाएंगे, या मे भी पहले दफा प्रेस करने के साथ ये सारे के सारे, लेट्स एक कार्ड पे मैं आपको बताता हूँ ना। तो दिस कार्ड, इसको मैंने ये कुछ 4-5 कार्ड्स को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस किया, तो यू कैन सी इट टर्न्ड व्हाइट, राइट। तो वो अनसस्पेंड हो गए। व्हेन आई प्रेस कंट्रोल जे अगेन, तो ये सारे के सारे सस्पेंड हो गए। तो सस्पेंड का क्या मतलब, सस्पेंड का ये मतलब है कि ये अभी स्टडी मोड में वहां पे मुझे दिखाई नहीं देंगे। अगर मैं स्टडी मोड खोलता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस पूरे डेक को, ये 40,000 कार्ड जो मेरे साथ है, सबको मैं अगर सब सस्पेंड करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे फिर स्टडी मोड में जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल आंकिंग को मैं क्लिक करता हूँ, तो I won't see any single card because I've suspended all of them. I won't be seeing them in the study mode ना। तो what I'll do is कि अभी मुझे क्या करना होगा, वो आसानी के लिए ना, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अभी आप टैग्स पे आओ, that's where the hierarchical tags add-on comes into play। अगर आपने वो डाउनलोड नहीं किया ना, तो yesterday I think या 2 दिन पहले someone showed me her Anki जो वो यूज कर रही थी, तो उसमें these tags were horrible। ये सारा का सारा कोई thousands of tags थे यहाँ पे। I was like screwed up when I had to organize it for her। तो मैंने उनको बताया कि यार आप उसमें ये करें कि पहले एड ऑन को डाउनलोड करें एंड देन वी कैन फिगर इट आउट। तो या दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू डाउनलोड। उसके साथ हो क्या जाता है कि ये सारे के सारे टैग्स आपके सिंक्रोनाइज हो गए। फॉर एग्जांपल, या लेट्स एक हायरार्की बन गई, फर्स्ट एड आप पढ़ रहे हैं ना, या पैथोमा आप देख रहे हैं, इट शुड बी मोर रेलेवेंट टू यू गाइस। पैथोमा आप पढ़ रहे हैं एंड इट्स ग्रोथ एडाप्टेशंस फर्स्ट चैप्टर एंड इट इज द फर्स्ट वीडियो इन ग्रोथ एडाप्टेशंस। तो व्हाट यू विल डू इज के आपने तो वो सारा का सारा ऊपर से सस्पेंड किया हुआ था ना, तो ये भी येलो दिखाई देगा बिकॉज ये भी सस्पेंड हो चुका है। तो अभी आप चाहते हैं कि आपको स्टडी मोड में सिर्फ इस वीडियो के कार्ड्स दिखाई दें बिकॉज ये आपने अभी अभी पढ़ा है ना। तो आप पूरे इस चैप्टर को, यहाँ से इस पूरे चैप्टर को क्लिक करके सस्पेंड नहीं करना है। देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ना पूरे चैप्टर में कितने कार्ड्स हैं, लेट्स सी। ये पैथोमा and wait a while, Pathoma growth adaptations, it has 210 cards। अभी अगर आपने पहली 2 वीडियोस देखी, आपने वो समझ ली, आपने तीसरी चौथी पांचवी नहीं पढ़ी, तो अगर आप इन सब को सब सस्पेंड कर देना,
तो स्टडी मोड में आपको कार्ड्स रैंडम आएंगे, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, कुछ फ्री रेडिकल पे आएंगे, कुछ एमिलोइडोसिस पे, सेल डेथ पे, एंड यू वोंट हैव स्टडीड दैट टिल नाउ। तो व्हाट आई प्रेफर इज कि आप वीडियो वाइज जाएं, पहली वीडियो को क्लिक करें एंड नाउ यू कैन सी 24 कार्ड्स, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट देम ऑल, ठीक है। और यहाँ से व्हेन यू प्रेस कंट्रोल जे अगेन, लेट्स प्रेस कंट्रोल जे, सस्पेंड हो गए, कंट्रोल जे अगेन, ये अनसस्पेंड हो गए। Now I can see these questions there in the study mode. तो when you will press this, for example मैंने सारा का सारा anking duck जो है वो suspend किया हुआ है, और मैं नीचे आया towards the, this is the anking step 1, and now this is the first chapter, Pathoma chapter 1। इसको आप क्लिक करें, या लेट्स से आप anking को ही क्लिक करते हैं, since you would have suspended all the other cards except those 24 cards, तो इसमें यहाँ पे आपको, अभी तो मैंने सस्पेंड नहीं किया ना, लेकिन आपको फिर यहाँ पे व्हेन यू प्रेस दिस anking step 1, तो let me show you, it has slowed down because of the zoom on। so यहाँ पे न्यू कार्ड्स जो आपके होंगे ना, ये 24 होंगे सिर्फ, और नीचे भी अगर कुछ हुए तो इट वोंट एक्सीड 24 सिंस यू हैव सस्पेंडेड ऑल द कार्ड्स एंड ओनली 24 कार्ड्स आर विजिबल, राइट। तो दैट्स हाउ यू डू इट, एंड देन व्हेन यू डू द सेकंड वीडियो, यू अनसस्पेंड द सेकंड वीडियो वाले कार्ड्स। लेट मी जस्ट शो इट टू यू ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये पहला चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, और मैंने इसकी ये पहले चैप्टर को ही मैं, चलो आपको दिखाता हूँ, ये 210 कार्ड्स हैं, लेट मी सस्पेंड ऑल ऑफ देम, राइट, इट वोंट हर्ट मी अ लॉट, लेट्स डू दैट। इसको मैं सबको सस्पेंड करता हूँ, राइट, सस्पेंड हो गए सारे। नाउ यू कैन सी, इसमें अगर मैं यहाँ आता हूँ ना, ये आंकी, let's wait for it a bit, and when you scroll down and you come to this chapter 1, तो इसमें सिर्फ वो कार्ड्स आएंगे अगर वो कहीं chapter 2 के भी tagged हुए या कुछ, otherwise you can see 0 cards, right, all the cards have suspended। now when you unsuspend this, that's how you do it ना। let's assume कि मैंने पैथोमा की फर्स्ट वीडियो देख ली, राइट, तो मैं यहाँ इस पूरे चैप्टर को अनसस्पेंड नहीं करूंगा, इट विल क्रिएट मेस फॉर मी, सारा का सारा वो रैंडम आएगा। तो यहाँ 24 कार्ड्स हैं, एंड सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, अनसस्पेंड देम, एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पे कार्ड्स अपीयर हो जाएंगे 10 कार्ड्स, बिकॉज मैंने लिमिट 10 की रखी हुई है, न्यू की या वट एवर, आप वो अगर चेंज करते हैं, मैं आपको जगह बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं न्यू प्रेस ना, यहाँ पे आई थिंक ये कि मेरे न्यू कार्ड्स हैं ही 10, वो बाकी सारे मैंने किए हुए हैं। तो ये देखें न्यू 10 कार्ड्स है ना मेरे, बाकी सारे के सारे स्केड्यूल्ड है मेरे, तो दे आर नॉट न्यू। अगर मैं इनको न्यू करूँ ना, यहाँ से ये यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरगेट कार्ड्स, अगर मैं फॉरगेट कर दूं ना, तो ये सारे के सारे, लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस वन, तो फॉर जनरल डेमोन्स्ट्रेशन फॉरगेट करता हूँ तो ये न्यू हो जाएगा। अच्छा, या दिस हैज बिकम अ न्यू कार्ड। नाउ यू कैन सी कि वहाँ पे मेरे साथ 11 कार्ड्स होंगे न्यू में, या 11 हो गए। सो दैट्स फॉर यू, यहाँ पे 24 होंगे बिकॉज यू हैव सस्पेंडेड 20 अनसस्पेंडेड 24 एंड यू हैवंट डन ऑल ऑफ देम। सो या दैट्स हाउ यू डू इट, राइट। मैंने उसको अभी अनडू कर दिया, बाकी 10 आ गया ना। सो या ये then when you watch the second video you unsuspend these cards, in the third video you unsuspend these cards, and that's how you then review it daily, and then you go to the second chapter and you do cards। तो इसमें आपके साथ फ्रीडम किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल मैंने चैप्टर 1 से ये 3 वीडियोस देखने और मैं तंग आ गया इससे, आई वांट टू डू GIT फॉर नाउ एंड देन आई विल कम बैक टू फ्री रेडिकल्स एंड व्हाटएवर, तो आई विल जस्ट डायरेक्टली गो टू GIT चैप्टर and I'll do whatever video I want to do। या फॉर एग्जांपल आपकी जो इंटीग्रेशन मॉड्यूल्स है ना अभी, तो उसमें कुछ लेक्चर्स जो हैं वो GIT के किसी टॉपिक पे होंगे, कुछ रीनल में किसी टॉपिक पे होंगे, तो मैं उस वक्त भी आई वुड यूज टू डू दिस कि अगर फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन्स पे कोई क्लास हो गई, तो व्हाई नॉट जस्ट वॉच पैथोमा की वो वीडियो और वो कार्ड्स में यहाँ से अनसस्पेंड करके वो कार्ड्स भी कर लूँ। तो थर्ड ईयर में इफ आई एम इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, तो बाय द टाइम आई रीच थर्ड ईयर आई वुड हैव डन अराउंड 10 20 30% ऑफ पैथो ऑलरेडी।
So yeah, and with Anki, you'll remember every single thing. You don't have to worry about forgetting and all. So you'll become even more organized and like pre-planned and all. So I think that's how you should be able to do it. एंड कुछ और भी चीज़ें हैं लेकिन वो मैं आखिर में बता देता हूँ. अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप वो पहले पूछ लें, देन वी कैन. और हमारे साथ मीटिंग में कोई 7 मिनट रहते हैं तो अगर इस टाइम में वो कंप्लीट नहीं होते तो देन आई विल बी मेकिंग अनदर लिंक एंड डायरेक्टली शेयरिंग विद यू सो दैट यू कैन देन जॉइन अगेन. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन अभी हो स्पेसिफिक तो वो अभी continue to ask it and then we'll proceed with the options. और वो scheduling की 2-3 बातें हमें बता के आपको meeting we can then end it. So you can proceed now. Baijan, this is clear, but can you please explain the add-ons? Like there are lots of options in there. अच्छा, एडॉन्स का ये है कि वो फिर और मजे के लिए ना, लाइक आई यूजुअली डोंट रिकमेंड अ लॉट ऑफ एडॉन्स बिकॉज कुछ लोग जो है ना वो बैकग्राउंड को बदल के उसमें सीनरीज लेके आ जाते हैं एंड लाइक अजीब अजीब चीजें, टाइमर लगा देते हैं एग्जाम की कुछ, लाइक यू डोंट नीड देम. आई हैव डन द होल डेक विद दिस सिंपल स्क्रीन और सब कुछ सिंपल रख के जस्ट ये एड ऑन मैंने ऐड किया हुआ है फॉर मोर ऑर्गेनाइजेशन एंड सो दैट आई कैन ट्रैक माय प्रोग्रेस. एंड नीचे हीट मैप का वो है, वो आपको आपका रिकॉर्ड बताता है. आज तो मैंने कुछ कार्ड्स नहीं किए लेकिन आपका प्रीवियस सारा रिकॉर्ड आपको बता रहा होता है ना कि आप कैसा, और बीच में ये वाइट है मैंने मिस डेज हैं या वट एवर. ये तो खैर मैं स्टेप 1 के बाद गॉट लाइक लेजी अ बिट, लेकिन इफ यू हैड सीन दिस बिफोर माय एग्जाम तो इट फॉर यू लाइक सी इट completely colorful and all ना. तो यहाँ से आपको इसका पूरा रिकॉर्ड मिल रहा था कि फॉर एग्जांपल इस दिन मैंने कितने कार्ड्स किए थे, तो लेट्स से 683 कार्ड्स ऑन मंडे ऑफ मार्च एंड ऑल. सो कुछ एड-ऑन्स मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको डाउनलोड करें. तो आई विल शेयर दिस स्क्रीनशॉट विद यू लेटर ऑन टू, यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट राइट नाउ. बट इसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि दे आर नॉट नेसेसरी. आई विल रिकमेंड यू कि एम्बॉस एड ऑन को डाउनलोड करें. इट इज वेरी वेरी मच रिकमेंडेड एंड इट्स रियली अमेजिंग. मैं आपको बताता हूँ इसको इसका फायदा क्या है. और आंकी सिमुलेटर, स्किप दैट, बेटर सर्च, यस डू डाउनलोड इट. If you want separate explanations on what's the benefit of each of that, I can explain it later on. Lekin for now it would be out of the time limitations of this meeting. और जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ. ये जो है ना इसका, लेट मी शो दैट टू यू. यहाँ पे एक है enhance main window, this one. फर्स्ट टाइम इसको डाउनलोड करो, दिस एम्बॉस एड ऑन को, hierarchical tags of course this one, and maybe heat map if you want that. others you can skip them for now. ये enhanced main window का ये है कि अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका स्क्रीन पे सिर्फ आपको ये चीजें दिखाई देंगी, not specifically these, a lot of this. इसमें ये कि you can track these ना, कि like if I see this thing ना तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने जो है इस फॉर एग्जांपल स्टेप 1 का ये जो है डेक, तो इसमें अराउंड 18,000 कार्ड जो हैं मैंने किए हुए हैं. और कोई दिस येलो शोज दिस सस्पेंडेड कार्ड, so 6,000 कार्ड जो हैं वो सस्पेंडेड हैं. दीज वर द कार्ड्स जो कि मैंने स्टेप 1 एग्जाम के बाद वो बेसिक जो चीजें थी जो कि आई डोंट नीड देम लेटर ऑन, तो उनको मैंने सस्पेंड कर दिया था ना. तो इन चीज़ों को फिर आप लाइक ट्रैक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी में कर रहा हूँ तो कार्डियोलॉजी में आई हैव डन 879 कार्ड्स ऑलरेडी. टोटल कार्ड्स इतने हैं, दीज यहाँ पे 1514 नोट्स हैं, 1221 कार्ड्स हैं. कार्ड्स और नोट्स में फर्क क्या है? कार्ड इज फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर लीड्स टू एडिमा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार्ड. तो इसमें अगर मैं हार्ट फेलियर को भी क्लोज डिलीट करता हूँ और एडिमा को भी क्लोज डिलीट करता हूँ तो these both become the notes. So 2 notes and 1 card. तो notes इसलिए ज्यादा होते हैं कि some of the cards have 2 or 3 or 4 close deletions. And if you don't know close deletion, so I can explain that to you too. If you have a question, then ask about it. If you know already, then I'll skip that. So ये कुछ add-ons हैं. ये enhance the main window, हीट मैप से आपको जिस तरह वो आई थिंक स्नैपचैट में या कहीं पे वो स्ट्रीक्स वगैरह की कोई चीजें हैं ना, तो if you do that in social media, तो you should be doing that here in Anki.
तो आप स्ट्रीक कभी तोड़ने ना देना अपनी, तो उसमें लाइक डेली बेसिस पे दीज शुड बी कलरफुल, इसमें कोई कलरलेस पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो या इट सीम्स फन टू। और एम्बोस का ये है कि वो दिस इज द लास्ट एड ऑन जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें ये है कि इसका यूज बहुत मजे का है। लाइक ये आपने यहाँ से खोला, तो यहाँ अगर आप पहले भी जो मैप इट इज अ ड्रग, तो इसके ऊपर आप सिर्फ ये कर्सर रखें तो इस ड्रग की पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाती है आपके पास। एंड इफ यू वांट टू डिग डीप इनटू इट, यू कैन देन एंटर दिस स्पेसिफिक ऑप्शन। इसको आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके साथ जो है इसका पूरा का पूरा वो लाइक एक्सप्लेनेशन इसकी आ जाती है। आई हैव अ फ्रेंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टेप 1 दीज डेज, तो वो कहता है कि मैं जो है वो एम्बोस का क्वेश्चन बैंक यहीं से यूज करता हूँ। सॉरी फॉर दिस वाज द अलार्म व्हिच आई हैव सेट। तो यहाँ से ये है कि लाइक इफ आई डू समटाइम्स यूज दिस कि क्यू बैंक सेशन फॉर एग्जांपल ब्रोंकियोलाइटिस पे टॉपिक है और आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस, आई जस्ट रीड इट इन एम्बोस। ठीक है, यहाँ से मैंने रीड किया एंड देन क्यू बैंक सेशन व्हेन यू क्लिक दैट, तो इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हुए एम्बोस में तो स्टेप 1 के, इट विल जस्ट स्टार्ट राइट अवे। तो यू कैन without going to Google Chrome and opening Amboss, you can Anki के साथ ही आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना क्वेश्चन बैंक और वो सब कुछ, look this is the question and then I have to answer and then I'll see the analysis and all, so that's a really good thing। लेकिन इसके लिए important ये है कि you should have an active Amboss account। तो फिलहाल तो मैंने फ्रेंड से एक अकाउंट वी आर यूजिंग ऑन शेयर बेसिस विच यू कैन डू, बट Amboss I can guide you to get a scholarship from them, it's very easy, you have to like email them and then एक दो चीजें वो मांगते हैं, at the end they give you either 50% or if your application is a nice one, so they do give you 100% scholarship। A lot of my friends have gotten that, I got that too। तो इसको जरूर Amboss से लें and use that simultaneously with your study। So yeah, these are the 2 to 3 add-ons which are really necessary that you should have these for a very comprehensive study style, and for the latter ones we can then discuss it in the group anytime। Hania has got some questions, I think। Can you please tell about the settings of cards per day and reviews per day? Yeah, of course। मैं यूं करता हूँ कि मैं एक न्यू लिंक जनरेट करता हूँ एंड देन प्लीज ज्वाइन दिस। इसका टाइम पूरा हो रहा है तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ एंड ज्वाइन दैट, ओके।